Moving toward the next, second is variable velocity. Variable velocity is what? Variable velocity is also called as non-uniform velocity, and by the term non-uniform it is very clear when the body doesn't cover equal distances in equal intervals of time. जब कोई body same time period में same distances cover नहीं करे, that time this is called as variable velocity in a specific direction. ठीक है, जैसे कि 1 आवर में 60 किलोमीटर्स कवर हुए तो 30 मिनट्स में 30 किलोमीटर कवर होना चाहिए था, बट इफ़ इट इज़ नॉट डन, इन 1 आवर 60 किलोमीटर वॉज कवर्ड, बट इन 30 मिनट्स 1 आवर में मीन 60 मिनट्स में 60 किलोमीटर्स जब कवर हो रहे हैं तो 30 मिनट्स में इसका हाफ कवर होना चाहिए, बट हाफ ना कवर होकर सपोज 20 किलोमीटर कवर हो रहा है. Okay, when same distance is not covered in equal intervals of time in a specific direction, that time it is called as variable velocity. Next is average velocity. Average velocity is what? It is the velocity of an object when the velocity of a body of an object is changing continuously. अगर किसी भी बॉडी की किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लगातार बदल रही हो, दैट टाइम इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एवरेज वेलोसिटी. एंड यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी बाय द अर्थमेटिक मीन ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज. किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग वेलोसिटी that is denoted by small u or last velocity means final velocity that is denoted by small v. You can calculate the average velocity of an object by having an arithmetic mean of initial velocity and final velocity of the object. Now the formula becomes average velocity is VAV, initial velocity plus final velocity divided by 2. So this becomes final velocity or average velocity equals to initial velocity denoted by u, final velocity denoted by v and divided by 2. So average velocity becomes u plus v by 2. Let's have an example. Suppose a car is at the point A. It is moving with velocity with initial velocity 20 meter per second. स्टार्टिंग में जब कार ने चलना शुरू किया तो उस टाइम उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड. इट इज़ मूविंग 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 एंड रीचेस टू अनदर पॉइंट, still moving on but having one point as B. Now its velocity is 40 meter per second. You can have the example of your car also. जब आपके पापा कार चला रहे हैं तो स्टार्टिंग जब कार की तो कम स्पीड से चलना शुरू किया, 30-40 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, 30-40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, सॉरी. और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती गई, हाईवे पर गए तो स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर भी हो जाती है, राइट. सो in the same manner, in the initial part, car was having initial velocity 20 meter per second and then it covered another velocity that is termed as final velocity and it is 40 meter per second. What will be its average velocity? By the formula, average velocity equals to initial velocity plus final velocity upon 2 means u plus v by 2. Substitute the values, 20 plus 40 initial की value, final की value, meter per second its unit, divide by 2. 20 plus 40 is 60, 60 by 2 on division 30 meter per second. So net average velocity of the car by which it is running onto the road, it is 30 meter per second. I hope it is helpful. Okay.